नवमी कक्षा रम्य संस्कृतम संख्या विशेषणानी एक means numerical adjective part 1. Students, in this part the forms of numerical forms 1 to 4 are explained. So let us start संख्या विशेषणानी. एकतः चतुःपर्यन्तं संख्या रूपाणि means forms of numericals 1 to 4. Now see here एक नित्यम एकवचनम. नित्यम एकवचनम means always singular. Then पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम and vibhakti. पुल्लिंगम means masculine gender, स्त्रीलिंगम means feminine gender, नपुंसकलिंगम means neuter gender and vibhakti means case. Okay. So एकः पुल्लिंगम, एका स्त्रीलिंगम, एकम नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति. एकम पुल्लिंगम, एकां स्त्रीलिंगम, एकम नपुंसकलिंगम द्वितीया विभक्ति. एकेन पुल्लिंगम, एकया स्त्रीलिंगम, एकेन नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति. एकस्मै पुल्लिंगम, एकस्य स्त्रीलिंगम, एकस्मै नपुंसकलिंगम चतुर्थी विभक्ति. एकस्मात् पुल्लिंगम, एकस्याः स्त्रीलिंगम, एकस्मात् नपुंसकलिंगम पंचमी विभक्ति. एकस्य पुल्लिंगम, एकस्याः स्त्रीलिंगम, एकस्य नपुंसकलिंगम षष्ठी विभक्ति. एकस्मिन् पुल्लिंगम, एकस्यां स्त्रीलिंगम, एकस्मिन् नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति. Now द्वि नित्यं द्विवचनम means always dual form. द्वौ पुल्लिंगम, द्वे स्त्रीलिंगम, द्वे नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति. द्वौ पुल्लिंगम, द्वे स्त्रीलिंगम, द्वे नपुंसकलिंगम द्वितीया विभक्ति. द्वाभ्यां पुल्लिंगम, द्वाभ्यां स्त्रीलिंगम, द्वाभ्यां नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति. द्वाभ्यां पुल्लिंगम, द्वाभ्यां स्त्रीलिंगम, द्वाभ्यां नपुंसकलिंगम चतुर्थी विभक्ति. द्वाभ्यां पुल्लिंगम, द्वाभ्यां स्त्रीलिंगम, द्वाभ्यां नपुंसकलिंगम पंचमी विभक्ति. द्वयोः पुल्लिंगम, द्वयोः स्त्रीलिंगम, द्वयोः नपुंसकलिंगम षष्ठी विभक्ति. द्वयोः पुल्लिंगम, द्वयोः स्त्रीलिंगम, द्वयोः नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति. Now 3 नित्यं बहुवचनम means always plural form. त्रयः पुल्लिंगम, तिस्रः स्त्रीलिंगम, त्रीणि नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति. त्रीन पुल्लिंगम, तिस्रः स्त्रीलिंगम, त्रीणि नपुंसकलिंगम द्वितीया विभक्ति. त्रिभिः पुल्लिंगम, तिस्रुभिः स्त्रीलिंगम, त्रिभिः नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति. त्रिभ्यः पुल्लिंगम, तिस्रुभ्यः स्त्रीलिंगम, त्रिभ्यः चतुर्थी विभक्ति. त्रिभ्यः पुल्लिंगम, तिस्रुभ्यः स्त्रीलिंगम, त्रिभ्यः नपुंसकलिंगम पंचमी विभक्ति. त्रयाणां पुल्लिंगम, तिसॄणां स्त्रीलिंगम, त्रयाणां नपुंसकलिंगम षष्ठी विभक्ति. त्रिषु पुल्लिंगम, तिसृषु स्त्रीलिंगम, त्रिषु नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति. Now चतुरः नित्यं बहुवचनम means always plural form. चत्वारः पुल्लिंगम, चतस्रः स्त्रीलिंगम, चत्वारि नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति. चतुरः पुल्लिंगम, चतस्रः स्त्रीलिंगम, चत्वारि नपुंसकलिंगम द्वितीया विभक्ति. चतुर्भिः पुल्लिंगम, चतस्रुभिः स्त्रीलिंगम, चतुर्भिः नपुंसकलिंगम तृतीया विभक्ति. चतुर्भ्यः पुल्लिंगम, चतस्रुभ्यः स्त्रीलिंगम, चतुर्भ्यः नपुंसकलिंगम चतुर्थी विभक्ति. चतुर्भ्यः पुल्लिंगम, चतस्रुभ्यः स्त्रीलिंगम, चतुर्भ्यः नपुंसकलिंगम पंचमी विभक्ति. चतुर्णां पुल्लिंगम, चतस्रूणां स्त्रीलिंगम, चतुर्णां नपुंसकलिंगम षष्ठी विभक्ति. चतुश्रुः पुल्लिंगम, चतस्रुषुः स्त्रीलिंगम, चतुश्रुः नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति. Now see here संख्या रूपाणि लिखित्वा वाक्यानि पूरयत. This is संभाषण संभाषापत्रम. First question, a dash in bracket 4 महिलाभ्यः तण्डुलान् आनय. In this sentence महिलाभ्यः is feminine gender chaturthi and panchami vibhakti. So answer is chatura. Chatura feminine gender, chaturthi and panchami vibhakti. Chatusrubhyah. So answer is chatusrubhyah. Okay. Now a तेषु dash in bracket 3 तरुषुः खगाः नीडानि
अरचयन्. In this sentence, Tarushu is neuter gender Saptami Vibhakti. So, 3. Answer is neuter gender Saptami Vibhakti Trishu. Next question. E dash in bracket 1. Kape topika patita. Kapehe means monkey. Kape is masculine gender Saptami Vibhakti. So, answer is एक masculine gender Saptami Vibhakti ekasya. So, answer is ekasya kape topika patita. Next one, E. Etasu dash in bracket 2. Kruti likhantu. Kruti is feminine gender Prathama Vibhakti. So, answer is Dvi Prathama Vibhakti feminine gender Dve. So, answer is Dve Etasu Dve Kruti Likhantu. Answer is Etasu Dve Kruti Likhantu. Next one, dash in bracket 3 Bhuvananam Samuha. Samuhaha Nama Tribhuvanam. Bhuvananam is neuter gender Shashti Vibhakti. So, 3. Neuter gender Shashti Vibhakti is Trayanam. So, answer is Trayanam Bhuvananam Samuhaha Nama Tribhuvanam. Next question. Dash in bracket 1. Dasi Sandesham Kathitavati. Dasi is feminine gender Prathama Vibhakti. So, एक प्रथमा विभक्ति एका. So answer is एकादासी संदेशम कथितवती. Next one, A. तयोः dash in bracket अपि कवि काव्यम अपठताम. Now see here, तयोः is pronoun षष्ठी विभक्ति. So, द्वि षष्ठी विभक्ति is द्वयोः. So answer is तयोः द्वयोः अपि कवि काव्यम अपठताम. Next one, I dash in bracket 1 नगरे सह वसति स्म. नगरे is neuter gender सप्तमी विभक्ति. So, एक neuter gender सप्तमी विभक्ति is एकस्मिन्. So, answer is एकस्मिन् नगरे सह वसति स्म. Next one, dash in bracket 2 अपि कवि काव्यम अपठताम. See here, kavi is prathama vibhakti masculine gender. So, dvi masculine gender vibhakti prathama is dvau. So, answer is dvau api kavi kavyam apathatam. Next one, katha mein tam dash in bracket 4 chhatrebhyah kathaya. Chhatrebhyah is masculine gender tritiya and chaturthi vibhakti. So, Chaturha is masculine gender, Tritiya and Chaturthi Vibhakti is Chaturbhyah. So, answer is Kathametam Chaturbhyah Chhatrebhyah Kathaya. Next one, Aham dash in bracket 3 Chauran Apashyam. Chauran is masculine gender, Dvitiya Vibhakti. So, 3. Masculine gender Trina. So answer is Trina. Trina. Aham Trina Choran Apashyam. So answer is Aham Trina Chauran Apashyam. Next one, Vayam dash in bracket 4 Geetani Gayamah. Geetani is neuter gender Prathama Vibhakti, Prathama and Dvitiya Vibhakti. So, Chaturaha is neuter gender Prathama and Dvitiya Vibhakti is Chatvari. So, answer is Vayam Chatvari Geetani Gayamah. Next one, Saha dash Vedana Adhitvan. Vedana is masculine gender Dvitiya Vibhakti. So, Chaturaha is masculine gender Dvitiya Vibhakti Chaturaha. So, answer is Chaturaha. Saha
चतुरः वेदान् अधीतवान्. Next one, वयम् in bracket 2 नेत्राभ्याम पश्यामः. नेत्राभ्याम is तृतीया चतुर्थी and पंचमी विभक्ति. So द्वि तृतीया चतुर्थी and पंचमी विभक्ति is द्वाभ्याम. So answer is वयम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यामः. Next one, शिवः dash in bracket 3 नेत्रैः पश्यति. नेत्रैः is तृतीया विभक्ति. So त्रि तृतीया विभक्ति is त्रिभिः. So answer is शिवः त्रिभिः नेत्रैः पश्यति. Now see your answer. अ चतुस्रुभ्यः महिलाभ्यः तण्डुलान् आनय. चतुस्रुभ्यः महिलाभ्यः. आ तेषु त्रिषु तरुषु खगाः नीडानि अरचयन्. तेषु त्रिषु. नेक्स्ट वन, एकस्य कपे टोपिका पतिता. नेक्स्ट, एतासु द्वे कृति लिखन्तु. नेक्स्ट वन, त्रयाणां भुवनानां समूहः. नाम त्रिभुवनम्. नेक्स्ट वन, एकादशी संदेशं कथितवती. नेक्स्ट, तयोः द्वयोः अपि कविकाव्यम् अपठताम्. नेक्स्ट, एकस्मिन् नगरे सः वसति स्म. नेक्स्ट, द्वौ अपि कविकाव्यम् अपठताम्. नेक्स्ट वन, कथामेतां चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः कथय. नेक्स्ट, अहं त्रीन् चोरान् अपश्याम्. नेक्स्ट, वयं चत्वारि गीतानि गायामः. नेक्स्ट वन, सः चतुरः वेदान् अधीतवान्. नेक्स्ट वन, वयं द्वाभ्यां नेत्राभ्यां पश्यामः. नेक्स्ट वन, शिवः त्रिभिः नेत्रैः पश्यति. I hope you all have understood this topic, Sankhya Visheshanani part 1. And if you didn't understand this topic, then see this video again and again, so you will understand it. Okay. So all for this part. Thank you for watching this video. If you like the video, please hit the like button. Do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to regular update about the course. धन्यवादः.